So, good afternoon, all. A very hearty welcome to each one of you present over here on this auspicious occasion of International Women's Day 2022. And as you all remember, we all assembled in this hall for a cultural function 2 years back for this program only. So, I hope we restart afresh and no more interruptions anymore. We keep meeting like that. So, with that in place, I begin this journey. I will rather take you on a journey for which Hiral and Shubhranjan and their team have prepared with women in PRL, their pictures for past 2 years. So let us have a look what all we have been doing for past 2 years. हो सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है बस एक बात कहनी थी पापा, मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगी। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। बेटा, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना। कमजोर हो गुंजन, और डिफेंस में कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं। जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी, सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। Congratulations, आपकी बेटी सिलेक्ट हो गई। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। खुली 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 तभी ऐसा लगे ढली रात है रात है रात है, डरी 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 दबे 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 पैरों से वो चली कांच की घास पे घास पे घास पे, खाली सी डिब्बी में हुई वो कैद थी, चंदा की मारी हमने गुलेल थी, तारों की चाबी से खुली सफेद सी सुबह 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 सुबह, जुगनी उड़ी नए नए पर दिए ओ पिंजरा खो, ओ पिंजरा खो, जुगनी उड़ी दिल में घर किए ओ पिंजरा खो, ओ पिंजरा खो। कौसले दोहराए से अभी फलसफे झूठे लगे सभी हो गए चकनाचूर जो रोशनी चल के यहाँ मोड़े हुए चलने लगे कहाँ, हुजूर है खुद का नूर।
चौखट पे मांगी जिसकी मुराद थी, जिसके लिए वो इतनी उदास थी, कोई ना जाने कितनी वो खास थी। सुबह 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 जुगनी उड़ी नए नए पर लिए ओ पिंजरा को, ओ पिंजरा को। जुगनी उड़ी दिल में घर किए ओ पिंजरा को, ओ पिंजरा को। बना उनकी शमशीर, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही होगी जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों में ढल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के, रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान। So I guess that was a good start. So next, okay. So to go ahead with the program, I invite Dr. Anil Bharadwaj, our director, to kindly address the audience present over here. So please.
Hall is full, eh? So we are back to normal. That's great. आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं. Happy Women's Day to everyone. Let's break the bias. Left hand first in the front. This is the right way to do. Both of this should be equal. And straight. Let me see how many of you can do. भाई फोटोग्राफर साहब ऊपर आ जाओ. चेक करो सबका. बाद में पता लगेगा किसका पोस्ट ठीक नहीं था. मेरा भी ले लेना है. भाई खड़े रहिए. थोड़ी देर एक्सरसाइज अच्छी है. Okay, photography? Okay, thank you. So, break the bias is the slogan for this year's Women's Day. And we have already broken the bias by taking part in one of those events which was organized by our chair of the Women's Cell, Professor Shubhabati. I'm not going to ask you results, don't worry, those who have participated. But that was actually meant to do a self-assessment. Self-assessment to see whether you have any bias. Bias मतलब भेदभाव, झुकाव, और क्या? हिंदी वाले कहाँ गए सब? हैं? तरफदारी, राइट? पूर्वाग्रह. और ब्रेक का मतलब ब्रेक लगाना, राइट? तोड़ना और रोकना. और biases can be implicit and explicit. अप्रत्यक्ष, परोक्ष, अस्पष्ट means implicit. Explicit means प्रत्यक्ष. It is evident, जिसको बोलते हैं. So biases can be of both kinds. It could be there, but you don't recognize it. And those which are visible to us, and other can tell, नहीं भाई, there is a bias. So break the bias का जो स्लोगन है, उसका उद्देश्य यही है कि we understand the bias पहले, and then only break it. Once you don't understand, you cannot break it, right? And it has to be for both implicit and explicit, both biases. Those who took that test, Shubhabati, क्या नाम था उसका? What was that test called? Implicit bias. Harvard University वाला. Harvard implicit test, right? So I believe many of you must have done it. क्या मैं जानना चाहूँगा कितने लोगों ने लिया था टेस्ट? भाई फोटोग्राफर साहब कहाँ चले जाते हो तुम? यही तो एविडेंस है, हैं? अभी फिर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा. पूरा व्यू लो. प्लीज रेज योर हैंड्स जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. गुड नंबर. आई थिंक देयर इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन दैट डे. हाउ मेनी? 90. Great. So that shows that we all are actually interested to remove the bias. That is the main motivation and the exercise behind that, and it is very, very evident. But PRL, as you know, is a 75 years old institute, and in PRL
we have equal opportunity. And equal opportunity for everyone to grow, to nurture, because we are always looking for talent. We look for talent, we care for talent, we nurture talent, and we produce talent. So talent has to be kept in mind always, because that is the basic of fundamentals of PRL's basis. And that is how Sarabhai ji, when he started PRL, he was bringing people from all over the world to start different programs of Government of India and Department of Space, which was later on called as Department of Space. And he was looking for talented people. And that is how the space program of India all started. He used to go abroad, and many of times I have read, and in fact, some of those who actually came through that way have told me that he met them in embassy, personal interview. And then he said, ये लीजिए आपका अपॉइंटमेंट लेटर, आ जाइए 2 महीने बाद and join us in the program. So talent is one which PRL has been always looking for, and we will always continue to look for in drive of anything and everything which we do. आज pre-noon session में, pre-lunch session में, there was an interactive session for all the women of PRL, ICC and Women's Cell jointly organized that. And I believe, I do not know, I think both Chair ICC and Chair Women's Cell is going to tell us how it all went. But I understand that it should have gone very well. And I have requested Chair ICC to organize such an event for also the males. Okay, all the gents, all the boys, right? We are all boys, yeah. अभी हम लोग बुड्ढे नहीं हुए हैं. So we love to be called boys. जैसे आजकल रॉकेट बॉयज चल रहा है ना, हैं? देखा है? I hope, right? So we are all boys, and we also should, because actually if you look, Women's Day, or for that matter any other day, Father's Day, Mother's Day, Valentine Day, Hindi Day, Republic Day, Independence Day, why we do? Why? What is the purpose? Purpose is to remind ourselves, right? Remind and remind. Because if you look at TV or print media, for example, you see advertisements. And same advertisement keep on repeatedly coming, right? Because they are trying to remind you. So that, because they have to sell their products, right? So if it goes in, you say, अच्छा ठीक है, ये अगली बार शॉप में जाएंगे तो ट्राई करके देखते, खरीद के लाते हैं. So this is the same way that we are reminded of ourselves that we had to celebrate the womanhood. We had to celebrate the woman in our life, in whatever form it is. There are n number of forms of women, right? And I'm not going to name, you know all. But this is a day of rejoice, of celebration for the woman by everyone. That is the bottom line. So let us celebrate this function, and thank you very much for all of you who have joined us in doing this celebration. And thanks to Women's Cell, ICC, and all the women of PRL in taking this participation. We all hope and pray that PRL will continue to excel and continue to nurture the talent. Thank you. Thank you, sir, for your motivating and enriching words. And definitely the Break the Bias, this which we did, it really, I hope it goes a long way. So coming to our next program,
we just saw women in pictures, but then there is another aspect when you see women actually working. So this time we have taken an initiative, and video recording has been done for most of us. We have tried to cover all the women in PRL, and their work is being shown in this video. So I'll just play it. Dr. Vikram E. Sarabhai once said, "I have often claimed that I have had but one good idea in my life, that true development is the development of women and men." His vision resonates the laboratory till date, as PRL stands testimony to some of the most prominent Indian women scientists like Dr. Bibha Chaudhary and Dr. Bimala Bhuti, who have carried out pioneering works in their fields. Today, the women at PRL are an amalgamation of expertise from various scientific, technical, and administrative fields. Their work speaks for them, and therefore, let's take a glance into their uniqueness.
I hope everybody liked that, and I hope nobody has been missed. If you have, please contact Women's Cell. Okay. Okay. So moving ahead to the cultural program of this evening, I would like to just say one thing, that Abhivyakti means expression, and on this Women's Day, we have tried to send out to you different kind of expressions in different forms, and I hope you all like it. But I request, wherever you like, wherever you reach that peak, please put your hands together and give us an applause. Okay, so moving on to that. Light. छू ले हर ऊंचाई तू, किसने तुझको रोका है, बात कल कुछ और थी, फिर से आज मौका है। ये बंदिशें ये बेड़ियाँ तुझे ना रोक पाएंगी, इरादों को शमशीर कर ये खुद ही टूट जाएंगी। तो दी, कैसा लग रहा है आपको आज के दिन? बहुत अच्छा अर्चिता, पर एक ख्याल आता है मन में कि क्या सिर्फ एक दिन मनाना ही काफ़ी है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हर दिन हर इंसान को सशक्तिकरण की आवश्यकता और अधिकार है? हाँ दी, है बिल्कुल, पर स्थिति शायद इतनी भी बेजार नहीं। और ऐसी कौन सी रात है जिसको सुबह का इख्तियार नहीं? और मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा, 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 धीमे बोले कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा। बीती रात बासी बासी पड़ी है सिरहाने, बंद दरवाजा देखे लौटी है सुबह, ठंडी है अंगीठी सीली सीली है दीवारें, गूंजे टकरा के इनमें दिल की सदा, नैना करूं बंद बंद बह जाए बूंद बूंद, नैना करूं बंद बंद बह जाए बूंद बूंद, तड़ पाए रे क्यों सुनाए गीत मल्हार दे, वे मलंग तेरा एक तारा, 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 गूंजा सा है कोई 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 एक तारा। होगी हमें तो रहमत अता, धूप कटेगी साए तले अपनी, खुदा से है ये दुआ, मंजिल लगा ले हमको गले, जुर्रत 100 बार रहे, ऊंचा इकरार रहे, जिंदा हर प्यार रहे, हम तो ना दे रे ना दे रे, धूम तो ना दे रे ना दे रे ना, धूम तो ना दे रे ना दे रे, धूम तो ना दे रे ना दे रे,
ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या, तुम तो ना दे रे ना दे रे ना, तुम तो ना दे रे ना दे रे, तुम तो ना दे रे ना दे रे ना, तुम तो ना दे रे। राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। ज़रूरत 100 बार रहे, रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी। धुम तो ना दे रे ना दे रे ना, धुम तो ना दे रे ना दे रे, धुम तो ना दे रे ना दे रे ना, धुम तो ना दे रे ना दे रे। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। हो दे रे ना दे रे, तुम तो ना दे रे ना दे रे। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। अच्छा अर्चिता, ये बताओ, क्या तुमने कभी सोचा है कि अभिव्यक्ति क्या है? नहीं दी, ऐसे तो नहीं, पर हाँ, मैं जो चाहूँ वो कह सकूँ, कर सकूँ, मेरे लिए यही अभिव्यक्ति है। अच्छा, पर अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि सबको इसकी इजाज़त नहीं, यूँ सहजता से अभिव्यक्त करना सबकी आदत नहीं, तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, कुछ ऐसी लड़कियों की जिन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए सारी बेड़ियां तोड़ दी। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए कहना आसान है, क्योंकि हम शहर में बड़े हुए हैं, सुविधाओं में रहे हैं। नहीं दी, आपको ऐसा क्यों लगता है? चलिए, मैं आपको कुछ ऐसों से भी मिलाती हूँ जिनके पास सुविधाएं नहीं, बेड़ियां 1000 हैं, पर फिर भी अभिव्यक्ति ही उनकी अधिकार और त्योहार है। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे।
बंपांजरो पहळो थयो एक सज्जन बंपांजरो पहळो थयो हाफी गई अमथा हरख मज हाफी गई रहूं तो हाफी गई रे सेज अमथा हरख मां हाफी गई सेज अमथा हरख मां हाफी गई सेज अमथा हरख मां हाफी गई Wow, Archita, that was impressive and thought-provoking. You give me a lot of hope and positivity today. Yes, Dee. So why not celebrate life, its benevolence, the womanhood? जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरिया लहराए जब जब मुझ पे उठा सवाल माई तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूँ माँ एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ मुझसे ही रूठी मेरी परछाई ओ मेरी परछाई तेरा ख्याल मारी तेरी चुनरिया लहराए जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुन
जब मुझ पे उठा सवाल, मारी तेरी चुनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। You sing so well, Archita. You know, the song reminds me of Lata ji. Each moment of her life speaks of success and only success. Truly. And do you remember Shamshad Begum? She had a distinctive voice and was a versatile artist, singing over 6,000 songs in Hindi, Bengali, Marathi, Gujarati, Tamil and Punjabi languages. Oh, and yeah, you know, there are many other women artists like them who created a niche in those times when women were not supposed to sing. Forget about singing for theatre or cinema. So, I have an idea, Di. Why not revisit these amazing Indian artists who broke the bias? Ah, yes, sure. पियो बोले पिया बोले क्या ये बोले जानो ना, जिया डोले होले होले क्यों ये डोले जानो ना। दिल की जो बातें जो दिल की है, दिल ही में रखना पिया। लब तो ना खोलो मैं खोलो ना लब तो, पर आँखों से सदके दिया। पियो बोले पिया बोले क्या ये बोले जानो ना, जिया डोले होले होले क्यों ये डोले जानो ना। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं। मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं। बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। चाहे तुम
जब पड़ी ख्वाब से अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। ला 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 ये क्या लड़की हुई है? क्या लड़की? इसे हम नहीं रख सकते। इसे अनाथालय? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सह सकती। बस अब और नहीं। मैं इसे लेकर जा रही हूँ, फिर कभी नहीं लौटूंगी। कहती है मुझे ज़िंदगी कि मैं आदतें बदल लूँ। बहुत चली मैं लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लूँ। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে।
I feel so elated, Archita. दुष्यंत जी rightly said. कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दी, इसी बात पे निकलते हैं अपने अपने रास्तों पर, पूरी उम्मीद के साथ, बिना रुके, बिना थके। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तो एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। Thank you for that applause. It really means to each and every person associated with this program. So, छू ले हर ऊंचाई तू, किसने तुझको रोका है? बात It's restart, sorry. No one wants to watch it again. If you want, I'll play it. Okay, so I thank each one of you present here, and I invite Shubhavati ma'am, who is the chair of Women's Hill, to please give the vote of thanks. You know, I am really speechless after that program. I have not seen the full program before. So, and what you have seen this time, you know, it's not only a program of Women's Cell. I think so many people of PRL were involved in this program. So I would like to thank all of you for putting out such a wonderful program. I may not be able to thank each one of you individually. We have given some credit. So really a lot of thanks to all of you who have contributed to this. So I will start with the formal vote of thanks. I first like to thank our director, Dr. Anil Bharadwaj, for his suggestions, advice, involvement. At each and every stage, I sent him mail, you know, very late in the night, and I will get the reply immediately. And so it had really helped me. And also, I would like to thank him for the surprise cake, which we got in the 8th floor today during our lunch. So clap for that at least.
I would also like to thank the members of ICC and, for organizing this program along with Women's Cell, and Dr. Indu Kapoor for being present here, and ICC members for their suggestions. And we started with a logo competition, and we received about 22 logos. I thank all participants for sending wonderful logos, and I thank all the judges for their timely evaluation. We have 2 joint prizes, and which is Mallika Singhal and Shubhranjan Gahan. So I would like our director to give them the certificates. Logo file is there. So we thought we will display the logo in the display board. We can play here. मेरा मोबाइल जी में So I will continue. Still she tries to download the logo. We do second person also. Shubhranjan Gahan, I have said. Shubhranjan Gahan and Mallika Singhal. Okay. Yeah. No, I wanted to show the logo and my flyer, but somehow No flyer is here. Oh, okay, it was not open. ठीक है, अभी logo कर लेते हैं. नहीं हो रहा है. We have to open Women's Cell. मेरा में भी है. दीपिका नहीं बना है. दीपिका किया. क्योंकि उसमें भूल जाएंगे. Shubhranjan. Yes. So all other logos will be displayed in the library, the computer that is there near the lift. We will display all the logos there. So then we had the implicit bias program, as Dr. Bharadwaj mentioned, and I would like to thank all the participants, including director and dean, for participating in this and setting a very, good example. And then we are also, this year, we also had, that was our director's suggestion, that we will
do some, we will help the underprivileged women, and for that we have taken up some activities with the Andhya Kanna Prakash Griha here in Ahmedabad and the Apang Manav Mandal, and we will also distribute some items to the construction workers in our campus. And in Udaipur, they have felicitated the healthcare workers in government hospitals with mask and water and cap. So this is a new addition to the Women's Day program that we have had this year. And now you have all seen the program. I would like to thank each and everyone who participated in the program and who contributed to the program, and all the members of Women's Cell. We have the we have a new women's cell just before the event, and I would like, and all the outgoing members as well as the incoming members were involved, so we have the best of both. So I would like to thank all members of Women's Cell for participating and for coordinating this program. And the list is long, and I would like to thank Bhushit for helping with the video arrangements here, Richa and her team for the catering arrangements, Rumki, Harsha, Vikas, Tushar, Sandeep for helping with the certificates for logo, and Rumki and Vikas for all the translations which they have done super quickly. I would like to thank the computer center and the auditorium for all the help. The transport section, because for all this video shooting we had to go many times to Thaltej and for this work also, so I would like to transport section for quickly arranging the transport. I would like to thank the accounts and all other involved, and also the cleaners who I gave special instruction to for cleaning all these areas and all, and which they readily did. I hope I have not left anyone. If I have left anyone, then my apologies in advance. And also, last but not the least, I would like to thank all the audience in auditorium and YouTube for making this program a grand success. Thanks to all of you, and happy International Women's Day to all of us. Thank you. So now I invite you all for the high tea outside.